Good morning, students. My name is SUVAS VORA, assistant CT. The first topic we can see in the last lecture is phase comparisons, career protections. In this scheme, we can see that the input signal compared with the leaving सिग्नल इट मीन्स दैट के अंदर जो करंट आ रहा है वो और बाहर जो जा रहा है वो करंट का फेस एंगल यानी कि फेज वोल्टेज और करंट का जो फेस एंगल होता है वो मेज़र करते हैं। अगर इंटरनल फॉल्ट है, इफ़ द इंटरनल फॉल्ट एट दैट टाइम यू कैन सी दैट ओनली द पॉजिटिव signals will be given or the carrier transmissions and the receiving the different, but when the fault will be external at that time we get also get in the negative signals, so that you can see that the input and output difference will be differ. So now then after we can see the schemes of the phase displacement carrier protection. If the fault is internal at that time, the fault detectors will be detect the fault and set the value is low set value or high set value. If the low set value, so coupling equipment is coupled with the band pass filter, then receiving the amplifiers, then compensators and the sort this portion so that trip the relay. If the low set value, it means that the external fault at that time the coupling equipment is coupled, then the simulation networks, then low set value is closed, then oscillator and modulators and the amplify the signals. So these are the scheme of the phase comparison method. Then after we can see the direct comparisons carrier method. If the fault is external for the A and B, so here the 21B the रिले नेम, यहाँ पे जो 21B है वो सर्किट ब्रेकर नेम है. So the relay of the circuit breaker B will send the blocking signal to the receiving circuit breaker of the A and tripping the fault on the circuit C and D. यानी कि ये जो सिग्नल है वो ब्लॉकिंग सिग्नल जनरेट करके जो 21A है उसको बोलेगा कि भाई ये पोर्शंस नहीं, यानी कि एक्सटर्नल फॉल्ट है. सो सी और बी का सर्किट ब्रेकर ऑफ होगा. So these are the main functions for the C and B. If the A and B, the A and B, this one is the relay 1, circuit breaker 1 and circuit breaker 2. Here the wave trap, we can see the reverse looking carrier start of the element, and this wave trap to see given the signal from this, and the coupling capacitor will be activated and the relay is not operated. So these are the basic scheme for the direct coupling capacitors or direct techniques. Now the PLCC technologies. So in the PLCC technology system use the same high voltage transmissions lines connecting the two substations for the electro communications यानी कि telecommunications purpose too. The PLCC is used as the long utilizations in the primary communication systems. Then also the voice data are not mixed, so they have generated the different type of the output RF power. Now the components, so PLCC terminals, then LMU, coupling capacitor and line trap. So the PLCC terminals voice and data into the high frequency carrier, so the output will give to 10 to 80
What's then after the LMU, line matching unit, for the impedance matching between the line and the coaxial cables, includes the high voltage protection device like the drainage coil and the lightning arresters and the अर्थ स्विच। यानी कि एल एम यू में क्या होता है कि जो वैल्यू सेट हुई है वो और केबल में जो करंट जा रहा है वो कंपेयर करेगा। देन आफ्टर द कपलिंग कैपेसिटर्स कपल द हाई फ्रीक्वेंसी scheme. The main component or main equipment is transmission and receiver, then after the filters, then after the line matching unit LMU, then after the wave trap, power amplifier and coupling capacitors. So here the explanations for the different parts. Then after the wave trap, you can see the combinations of the RLC is the wave trapped systems. Yes, this one, the main component of the PLCC scheme, main coil, tuning device and protectant device. So main coil of the PLCC is, or the wave trap, is the outer of the aluminum parts. Yes, so the line matching LMU is, you can see the diagram. Then after we can see the applications of the PLCC, providing the relaying, telemetry and the telephonic. Then after we can see the PLCC limitations. So this topic we can see in the last lectures. Now the today's topic is, the last topic of these chapters is the carrier aided distance protections and the carrier blocking scheme. Now start with the carrier aided distance protection scheme. The protection scheme which provide the instantaneous tripping for the entire length, the line and the backup protections are known as the carrier distance protection scheme. Yeah. Tripping for the entire length of the line and the backup protections are known as the carrier aided distance protection scheme. So in this scheme, the distance relay are used at the both the end of the line, which interconnected using the carrier signals. So the various method used for the carrier aided protection systems. So in these systems, in this scheme, two distance relay are used at the both the ends. Yes, in this scheme the distance protections are both the ends. So there have the two main protection systems. The first one is the carrier transformer, or they also call the carrier inter-tripping scheme and the carrier blocking scheme. So this one is the basically the scheme of the phasor comparisons and the direct comparisons method. In the similar way we can say that हम ऐसा कह सकते हैं. So start with the topic of the carrier transformer or the carrier inter-tripping scheme. When the carrier signal is used for the tripping the circuit breaker, the scheme is called the transformer tripping scheme. यानी कि जब करियर सिग्नल की बात हम करें सो द ट्रिपिंग हो जाता है यूजिंग द सर्किट ब्रेकर, एंड दिस स्कीम इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसफर ट्रिपिंग स्कीम. So this scheme is completely isolated the circuit simultaneously for the both the end. इसमें जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं जो दोनों सबस्टेशंस, this scheme have the two another methods, underreach transformer tripping and overreach transformer tripping. Now the underreach transformer tripping is also called the
direct under reach transformer tripping scheme. Yes, this one is the under reach scheme. The scheme in which the directly coupling of the carrier signals trip the circuit breaker. The scheme is known as the direct under reach scheme. यानी कि जो स्कीम इसमें डायरेक्टली करियर सिग्नल्स ट्रिपिंग सिग्नल डायरेक्ट सर्किट ब्रेकर तो देता है और डायरेक्ट सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, यानी कि आप यहाँ पे एक सर्किट देख सकते हो. सो द डायरेक्ट अंडर रिच ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग स्कीम, यू कैन सी द फिगर्स. सो कंसिडर द प्रोटेक्शंस ऑफ द लाइन ए बी. सो हम यहाँ पे ए और बी जो लाइन है, जो सब स्टेशंस है, उसको प्रोटेक्शंस की बात करेंगे. इफ़ द फॉल्ट अकर्स एट द स्टेशंस बी, अगर यहाँ पे स्टेशंस बी के नज़दीक फॉल्ट होता है तो द डिस्टेंस रिले विल ट्रिप द सर्किट ब्रेकर्स इंस्टेंटली and the immediately send the inter-tripping carrier signals to the stations A for tripping the circuit breakers after some time delay, so that the carrier transmitter TX at the stations B send the carrier signal into the line and the carrier signal is transmitted at the station A. जब अगर फॉल्ट में यहाँ पे कंसीडर करता हो सो सब स्टेशंस बी के नज़दीक, तो सबसे पहले यहाँ का जो सर्किट ब्रेकर है वो ओपन होगा और वो यहाँ पे ट्रांसमिट दी सिग्नल करेगा, लाइन थ्रू ट्रांसमिट होगा और जो सब स्टेशंस ए के रिसीवर है तो रिसीव दी सिग्नल्स एंड दी सब स्टेशंस ए के जो सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो जाएगा. तो दिस स्कीम्स और दिस send the tripping signals to the trip the circuit which operate and close the contacts of the circuit breaker at a stations. So these are the called the direct under reach transformer tripping scheme. So here you can see that direct under reach transformer tripping scheme में suppose the fault will be external fault, तो एक्सटर्नल फॉल्ट में क्या होगा, ये जो डायरेक्शंस ए है यानी कि हमने जो जोन बताए थे लास्ट टाइम, सो जोन 3 विल बी एक्टिवेटेड, यानी कि बैकअप जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा और साइंस दी फॉल्ट इज़ दी एक्सटर्नल. सो यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होगा और द सब स्टेशंस बी के जो सिग्नल्स है वहाँ पे रिसीव होगा एंड दी decide that there are the no internal fault, so that the blocking scheme will be activated and the no any circuit breaker will be operated. So these are the simple for the direct under reach transfer tripping scheme. Okay, so यहाँ पे इस तरह का होता है कि जैसे ही मैंने बताया यहाँ तक जोन 1, then after zone 2 and then zone 3. So zone 3 will be activated and give the signals for the direct A for the transmit the signals. Okay, this one is the blocking signals for the external fault. Now the next topic is yes, same here you can see that कि यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे सर्किट ब्रेकर को यहाँ पे रिसीव द सिग्नल्स मिलेगा कि भाई दिस वन इज़ द इंटरनल फॉल्ट. अब जब बात इंटरनल फॉल्ट की होगी, सो दिस वन द
substations A will be receive the signals of the fault current and open the circuit breakers, then after send the signals from the another circuit breakers, and then after again the receive the open the circuits and the receivers will be receive the signals. So in the last lecture we can already seen that. Now what is the direct underreach transmitter tripping scheme? Actually they have the main point is when the underreach zone 1 element detects the faults. अब जो फॉल्ट इंटरनल फॉल्ट होगा तब क्या होगा, तो दे विल ट्रिप द लोकल सर्किट ब्रेकर इंस्टेंटली, यानी कि जो लोकल सर्किट ब्रेकर है वो इंस्टेंटली ओपन कर देगा या ट्रिप कर देगा. देन आफ्टर सेंड द डायरेक्ट ट्रांसफर ट्रिप सिग्नल्स टू द ट्रिप रिमोट सर्किट ब्रेकर. और क्या करेगा, डायरेक्ट जो ट्रिप सिग्नल है वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए डायरेक्ट ही सिग्नल भेज देगा. अपॉन द रिसीव ऑफ द डायरेक्ट ट्रांसफर ट्रिप सिग्नल्स द सीएन ट्रिप इंस्टेंटली विद द नो अदर्स कंडीशंस विल बी नेसेसरी, यानी कि कोई अदर कंडीशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे फॉल्ट होगा वो नज़दीक सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देगा एंड देन आफ्टर गिवन द signals from the other to direct to open the circuit breakers. So these are the called the direct underreach transformer tripping scheme. Now the another one is the permissive underreach transformer, where is in the incoming signal is utilized to trip the circuit breaker at the receiving end after the local distance relay is operated, and is also known as the permissive underreach transformer tripping scheme. सो परमिसिव अंडर ट्रांसफॉर्मर रीचिंग स्कीम में क्या होता है कि जब इनकमिंग सिग्नल जब यूटिलाइज होता है टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर, यानी कि सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए जो सिग्नल आता है वो दूसरे एंड से आता है, एंड देन आफ्टर द लोकल डिस्टेंस रिले विल बी ऑपरेटेड. सो इसमें ऐसा होता है कि जब फॉल्ट होता है तब जो लोकल सर्किट ब्रेकर होता है वो पहले ओपन हो जाता है एंड देन आफ्टर दी ओपन दी अदर्स. सो इन दिस केम द एक्सिक्यूशंस ऑफ द ट्रांसमिटेड command take place at the receiving end when the starting element of the local distance relay have the already pick up and they confirm the existence of the fault. So in these systems, when the underreach zone 1 element detect the faults, the trip the circuit breaker instantly, but the send the permissive transfer trip signals to relay at the remote terminal. यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि if the relay at the remote terminal see only the zone 2 fault, अगर zone 2 fault होगा तभी ये रिमोट टर्मिनल ओपन होगा, यानी कि परमिसिव सिग्नल विल बी bypass the time delay and allow the circuit breaker at the remote tripping to the instantaneously. यानी कि जोन 2 में फॉल्ट होगा तभी ये फॉल्ट परमिसिव से ओपन होगा. So we know that the fault in the middle is 80%, so the circuit breaker at the both the terminal will trip instantly by the zone 1, and for the fault beyond the zone 1 reach of the one terminal, so permissive transfer trip signal because very important. सो जोन 1 से यानी कि 80% से ज़्यादा दूर होगा, यानी कि नियरेस्ट टू द सर्किट ब्रेकर और सब स्टेशंस भी एट दैट टाइम दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन द परमिसिव अंडर रिच ट्रांसमिशन ट्रिपिंग द फॉल्ट एट द एनी बोथ द टर्मिनल, दोनों वो ये देखेंगे कि भाई फॉल्ट हुआ है इन द इंटरनल, देन द बोथ द टर्मिनल रिसीव द परमिसल सिग्नल्स एंड द बोथ द
से टर्मिनल्स ट्रिप इंस्टेंटली। सो डायरेक्ट एक सिग्नल यहाँ पे नहीं भेजते हैं, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है तो दोनों सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाते हैं। सो दीज आर दी स्कीम्स फॉर दी सिग्नल्स। सो इसको हमने अभी जो देखा वो पूरी स्कीम किस तरह से एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं। हम बोलते हैं फॉल्ट डिटेक्ट हुआ, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, जो भी फॉल्ट है तो किस तरीके से वो कंसिडर करते हैं। सो वी नो दैट द 80% ऑफ द zone 1 यानी कि Z1, then after 120% is zone 2 and the 150% is zone 3। now यहाँ पे किस तरह से डिटेक्शंस होता है अगर फॉल्ट एक्सटर्नल फॉल्ट है। नाउ इन दिस कंडीशंस द फॉल्ट विल बी एक्सटर्नल एट दैट टाइम व्हाट हैपन। तो ये फॉल्ट एक्सटर्नल होगा, इसलिए द direct relay scheme will be send the signals and the local signals will be receive the signals and this will be activate the only the Z3 यानी कि FD ओपन होगा। फॉल्ट डिटेक्शंस हुआ सो दैट द करंट इज फ्लो इन द Z3 and terminal and tripping only the Z3 यानी कि यहाँ पे रिसीवर के ए और बी के जो ट्रांसफॉर्मर है और सर्किट ब्रेकर है वो नहीं ओपन होंगे। सी फॉर बी और सी के जो हो सर्किट ब्रेकर है वही ओपन होंगे। अगर फॉल्ट इंटरनल फॉल्ट है, सपोज द फॉल्ट विल बी इंटरनल, सो दैट दी सबसे पहले यहाँ नज़दीक का जो सर्किट ब्रेकर है वो ओपन होगा और वो सिग्नल देगा TX टू RX को और बोलेगा कि भाई Z1 है या Z2 है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो Z1 है तो Z1 विल बी ऑपरेटेड एंड दी FT सिग्नल्स एंड Z1 डायरेक्टली ट्रिप द सर्किट ब्रेकर्स कॉइल। अगर यहाँ पे फॉल्ट होगा तो Z2 ऑपरेट होगा। सो दीज आर द ट्रांसफर ट्रिपिंग स्कीम फॉर द all systems। now the tripping by the acceleration। so tripping by the acceleration स्टार्ट करने से पहले हम वो क्या है वो देख लेते हैं। so the scheme in which the incoming signal extended up to the measuring range यानी कि जो measuring range है वो कंसिडर करेगा of the first zone of the distance relay at the receiving end, it is known as the carrier acceleration scheme। यानी कि the scheme will be incoming signal extended upon the measuring the zone 1। अगर जो zone 1 में है वो कंसिडर करते हैं तो वो एक्सेलरेशंस में कंसिडर होगा। द बेसिक ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अंडररिच ट्रांसफर एंड द करियर एक्सेलरेशन स्कीम इज अनलाइक द फॉर्मर एंड द लेटर एक्सेप्ट अ सर्टन transmit the signal। so the in a general thus the accelerations carrier scheme, the signal received from the opposite end extend up the reach of the zone 1। यानी कि अगर फॉल्ट यहाँ पे हुआ तो यहाँ से जो जोन 1 है, यहाँ पे जो जोन 1 है वो कंसिडर करेंगे। so that the 80% and to the 120% of the length to be protect of these sections। so आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब रिले ए है तो रिले ए फॉर द जोन 1 यहाँ तक 80% हुआ। देन आफ्टर द रिले ए जोन 3 एंड द जोन बी रिले बी इज द जोन 1। सो ये दोनों जो कॉम्बिनेशंस है उस पर डिपेंड्स होते हैं। सो द स्कीम जैसे ही मैंने अभी बताया कि द स्कीम इन विच द इनकमिंग सिग्नल्स
extend upon to the measuring range of the first zone, and the distance relay at the receiving end is known as the carrier acceleration scheme. Okay, now this is the similar permissive underreach scheme, except from the fact the receiving permission signal remote the time delay from the zone 2 element instead of the zone 3 element. So the scheme is shown in the diagram. Okay, you can see the figures, this one. Okay, so जो आगे हमने देखा वही फिगर्स है जो एक्चुअली जोन ए और जोन बी यानी कि रिले ए एंड रिले बी का पूरा यहाँ तक है, एंड जोन 3 इज दी होल. इन सिमिलर वे फॉर द रिले बी, जोन ए, जोन बी, बी करियर एडेड ट्रिपिंग. ये जो करियर एडेड ट्रिपिंग यहाँ पे रिले ए करियर एडेड ट्रिपिंग और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो एक्चुअली करियर एक्सेलरेशंस है. सो नाउ द परमिसिव ओवररीच ट्रिपिंग सिग्नल्स more common a line protect scheme than the others for the TT. TT means the transfer trip scheme. And if the overreaching distance relay see the fault, permissive TT signals in sent to the others. So to trip the instantaneously, how it possible? So the overreaching distance relay must be seen a fault, and then after the receiving the permissive transfer trip signals from the opposite terminals. यस, द परमिसिव ओवररीच स्कीम. यहाँ पे जब फॉल्ट इंटरनल होगा तो सबसे पहले यहाँ पे सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा. देन आफ्टर ये सिस्टम ट्रांसमिट द सिग्नल्स फ्रॉम 1 to 0 यहाँ पे ओपन होगा, एंड देन आफ्टर द ट्रिप द सर्किट ब्रेकर. पहले ओपन करेगा एंड देन आफ्टर द ट्रिप द टोटल signals. So the carrier blocking scheme. So carrier blocking scheme actually क्या है? So carrier blocking scheme is in the case of the external fault, the carrier blocking scheme blocks the operations of the relay. जब external fault है so carrier blocking scheme ended lines. So you can see the figures here. There are the three stations A, B and C. Here the A, B and C, and the different type of the protections. If the fault is detected in the nearby the lines, so it is the blocked by the carrier signals, and the receiver looking directional relay generate the signal which is then transmit to the other end in the other to the prevent trip. अगर मैं F1 की बात करूं तो Z1B में प्रोटेक्शंस होगा. सो यहाँ पे रिले ए दोनों ऑपरेट होगी यानी कि लुकिंग स्कीम होगा, बट यहाँ पे करियर ब्लॉकिंग स्कीम अप्लाई होगा. सो दैट द डिस्टेंस रिले नीड टू we operate at the stations A and station B if the fault is occur. So stay at F1 anywhere the protected zone, but if the fault is external to the zone 1 and the occurrence in the forward directions of the receiving looking relay, the relay will not operate it. The relay contacts on the both the ends will remain close and thereby keeping the fault. जैसे ही मैंने आपको बताया कि इंटरनल फॉल्ट होगा यानी कि जोन 1 में 80% में होगा तभी दोनों रिले ओपन होंगे, अदरवाइज लुकिंग में जाएगा. व्हेन द फॉल्ट अकर्स इन द F2 in the zone 2, it will be seen by the forward looking zone at the A and by the receiving looking zone B, zone 2. यानी कि जो F2 की बात करूं तो F2 लुकिंग होगा और यहाँ पे फॉरवर्ड लुकिंग होगा. यानी कि सबसे पहले बी के नज़दीक के रिले ऑपरेट होंगे, देन आफ्टर
एक का रिले ऑपरेट होगा. Since the fault is located near the beam, has to be cleared by the unit zone 2. If the fault is not instantly cleared by the relay, instead at the sections B for the zone 2, the relay will trip after the time lapse in the zone 2. This work is the backup protections. So these are the whole schemes for the carrier blocking scheme. So today's worksheet questions give the method name of the carrier distance protections and what is meaning of the carrier inter-tripping scheme and what is the meaning of the carrier blocking scheme. These two questions are your worksheet questions and explain the direct under reach transfer tripping and the permissive under reach transfer tripping scheme is your assignment questions. If any query regarding this topic, you can contact me. If any questions regarding this topic, you can also mail me. My mail id and the contact number is in your screen. Thank you.